Okay, we are starting with the theory of consumer behavior. I think this part we have not done, right? Okay, so we are taking up this part. This is also a very interesting and easy part because you guys are aware of this already. This is the only remaining part of the second module. Okay, we're taking up very first concept is with regards to wants. Okay, why did this chapter begin with wants? We are going to study about the theory of consumer behavior. So basically, we are going to focus on consumers. When we are going to talk about consumers, so we have to think from the demand point of view. And to do demand or to understand demand, we should not forget the basis of law of demand is the law of consumers behavior, the law of DMU. So that is why we are going to talk about the theory of consumer behavior here. Okay. Now, when you demand, it is nothing but wants, and wants you have learned already. All desires, all your things that make you happy, things that satisfy you, everything is wants for you. Now your wants can be of various kinds. It can be a basic want, basic necessities wants. It can be something of comforts, and finally land up to luxuries also. It can be anything and everything. Okay. So talking about this wants, let's get into the page work now. So you can read big, so you will hopefully understand and you guys know what we are going to talk about. Okay. There are some wants, characteristic features coming up. I think I'll catch hold of you guys only as usual. You will be helping me because you know what these things are. Okay. They say all desires, tastes, motives of human beings are called wants in economics. Wants may arise, which are elementary or psychological uses. Since these uses are resources are limited, we have to choose between the urgent wants and not so urgent wants. Okay, which means we are trying to talk about the intensity of the wants. Okay, sometimes you are very intense. Okay, sometimes you want it very, very desperately, that thing. And sometimes you say, it's okay if I don't have it, no problem. Okay, so that is how the wants are. They are very psychological in your needs. And they are sometimes very elementary. Elementary means very detailed. You know exactly what you want. And until you get that same thing, you're not mentally satisfied. So this is what wants are. Let's check up the first feature. Okay. Let's go to Karishma. Karishma, first point. Wants are unlimited in number. They are never completely satisfied. What do you mean by this? So we want everything we see. Like if we, for example, if a child wants a toy today, also he will demand another toy for tomorrow. Okay. So basically, it is one is not enough. You want more and more and more things. Initially, you promise dad, okay, after this, I'm not going to ask you anything. But within next half an hour or 1 hour, you remember something else also. Okay. Second one, you go to Urvi. Urvi, wants differ in intensity. Some are urgent, others are felt less intensely. Means what? सर मतलब जो भी हमें अर्जेंट नीड होते हैं वो जो भी हम लोग को अर्जेंसी है वो हम पहले उसका डिमांड करेंगे और जो भी वंस अर्जेंट है वो पहले डिमांड करते हैं, करेक्ट? हाँ और जो लेस अर्जेंट है वो बाद में डिमांड करते हैं. That's what you're saying, which is right. Okay, we go to the third point. Ashwini, each want is satiable. Ashwini? हाँ सर. Yeah, third point. Each want is satiable means what? Okay, anybody who can explain? कोई भी नहीं explain कर पाएगा. Nikit, can you explain? Yes sir. बोलो. So I think so. मतलब हर एक वांट मतलब अपने हम लोग को satisfy करता है. मतलब करेक्ट है. Am I correct sir? या यू आर करेक्ट. हर एक वांट हमको सेटिस्फाई करता है क्योंकि वांट हमारा है.
जितने हमारे wants हैं हमको सब satisfy कर सकते हैं. They are satiable. Satiable means they can give you a point of satiety. They can give you a maximum satisfaction. So you are right in saying that. Abhishek, next point. Wants are competitive. They compete with each other for satisfaction because resources are scarce than all the wants. Abhishek? Yes, sir. बोलो. Point का meaning? अरे बहुत easy है, क्या डर रहे इतना? Wants are competitive का meaning क्या है? Wants are competitive means there is a competition between two wants. Okay? They compete with each other for satisfaction, which means what? क्या हो गया? नहीं आता है क्या? चल कोई बात नहीं. We'll ask somebody else. Sanjita, can you explain me? Sanjita, is your mic working today? Okay, Vaishvi, can you answer? Vaishvi? Okay, Siddhi, please come. Siddhi, please answer. Yes, sir. Fourth point. Fourth point. Wants are competitive. मतलब हर एक want एक दूसरे के साथ compete करता है. Like we have so many wants, तो पहले कौन सा होगा satisfy? They compete with each other for satisfaction because resources are scarce to satisfy all these wants. Means, can you satisfy all your 1,000 wants at a time? No. Why? Why? What is the main reason? You may have 1,000 wants. You can't satisfy, you're saying all 1,000. Why? What is the reason? It's such an easy thing. Come on, speak up. It's not difficult question. Preeti, can you answer? Preeti Gaura? Yes, sir. So Because resources are scarce, in the the other is why can't you satisfy all 1,000 wants together? What resources are scarce? So easy. Come on, tell me. 1,000 wants एक साथ नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? What is the reason? Sir, can I answer? Yeah, please answer. Sir, we can take example of current situation, that is lockdown. The factories are not working. Yeah. We can take example of Maggie. There is no production of Maggie, and every person wants to eat Maggie. So only some people can have whatever the production we have till now, and the rest won't get it. So the wants won't be there. Not bad at all. My question was very simple, Preeti. Siddhi, I said that you have 1,000 wants, but can you satisfy all 1,000? You said no. क्यों नहीं satisfy कर सकते हैं? Because इतना money नहीं है हमारे पास. So resources are scarce. That is what they have said. Okay. Abhishek, are you understanding now? Yes, sir. Good. Fifth one you'll ask. अच्छा पहले संजीता का story सुनते. संजीता ने कुछ भेजा answer. Natural resources are scarce. Abhishek ने भेजा. And no sir. Sanjita said no sir. What no you said here? Sanjita, please write in detail your messages. So SMS देके तो नहीं समझेगा किधर गई क्या है क्यों नहीं आती है आंसर में देने पता नहीं है. Okay, we go on to the next one. Marvel, can we have the next point with you? Wants are complementary. Some wants can be satisfied. Yes. Bolo. So in this, if you take an example of an ink pen, so you need an ink pen, but only buying an ink pen won't satisfy your want. You will need an ink bottle for it, so that you can write through it. So to satisfy one want, we might require other
commodity. More than mangoes, correct. Perfect. Okay, wants are alternative, or wants have alternative also is right to say. Daksha, can you explain me this? Yeah, sir. Bolo. 6 point. Sir, wants are alternative. मतलब we have alternatives. अगर कहना. Chalo, I'll give an example. Okay, I mean hint towards an example. You complete the word. Yeah, okay, sir. I want to eat mango, but mangoes are very expensive. Then what I can do? Then I can do what? Eat the fruit which is मतलब mango juice पी सकते हैं, fruity या somewhat alternative uses रहता है. Correct. So there are wants are alternative. Okay, next wants are subjective and relative. Okay, Sejal, please explain how is it subjective? Wants change from time to place to place. I'm not clearly hearing your voice. Okay. Can you repeat it, please? Wants change from place to place. Wants तक सुनाई देता, उसके बाद एकदम शांत हो जाती है तुम्हारा. So I don't know. Your mic is. Just come near the screen and speak, please. And come on the screen also, na. I should see your face also there. Yeah, bolo. Wants are changing from place to place. Okay. Wants are changing from place to place, you're saying. Okay. So that is relative. But why are this subjective? Anybody who can answer? Sarfaraz, can you try? Yes, sir. What is subjective? सर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, मतलब अभी नहीं, वो रिलेटिव हो गया. सब्जेक्टिव क्या होता है? प्लेस टू प्लेस. नहीं. Okay, I'll tell you what is subjective. Subjective means it's a descriptive thing. So you can describe what are your wants. And if you अभी मुझे कोई एक आइसक्रीम का बोल भर के दे दे जिसमें बहुत सारा आइसक्रीम और फ्रेश फ्रूट्स हो, I can describe these things, and when somebody will really bring it near me, I'll be satisfied because I was describing that, and somebody is really bringing something like this near me that very moment. That will be subjective. Subjective means yes. What you're saying, place to place, time to time, is also subjective only. Okay, if I go to a restaurant, sit there and eat one particular dish there, but when I go next time to the same restaurant, then I may not be getting the same enjoyment. So it is relative and subjective. Basically, you're describing yourself that. It's a descriptive concept. It is not quantitative, it is qualitative. Wants vary with time, place, and person. I think relative only it means. Some wants recur again, whereas others do not occur again and again. Let's ask Karan, can you answer this? Yes, sir. Yeah, please answer. So some wants recur again and again, whereas some don't occur. The food reoccurs again and again. The food ka demand we have always. But if we want a product, we buy it once, then demand won't recur again. Now 3-4 months के लिए, but food हर दिन चाहिए. दूसरा क्या एग्जांपल दिया? एक फूड था, दूसरा एग्जांपल क्या है? कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी. कोई भी प्रोडक्ट है. Okay, fine. So let's say right now you don't want umbrellas, but might be in a month's time you may start requiring umbrellas. Okay, it may not be recurring. Okay, you don't require it always because if you buy a wind cheater, it solves your problem. It's not necessary you want the umbrella only. So some wants may not occur again and again. Okay, so you talk any product, sometimes you require them, you want them because you're seeing others also. Like right now we are all sitting on a laptop or a phone, we all need a headphone. Okay, but when you're sitting and watching TV, you don't need headphones, right? अरे हाँ तो बोलो कोई ना. हाँ बोलते हैं ना नहीं बोलते हैं. सब लोग छुप के बैठा पर्दे के पीछे. एक तो सब लोग ऊपर आओ, बाहर आओ, सब लोग स्क्रीन पे आओ, सब लोग. Why you all are hiding yourself first thing? Other lectures you are sitting hiding, I can understand. They don't want you to disturb. I want to see your faces. Okay? स्माइल कैसे करते रहे आज? हाँ, ऐसा स्माइल देखो, ऐसा तंग होके बैठे लगता है लेक्चर में मेरा आज. पूर्वी उठ के लिए तू? Yes sir, coming. Wait. Come fast. Don't wear new dresses and come and decorative dresses. You can just be with your normal dresses. It's okay. अरे नहीं. अरे नहीं होती है. करण, इधर तू आ जा. तेरी शक्ल भूल जाती है मुझे. सर पीसी है पीसी.
शाने तू है ना अपना सेल लेके बैठा कर कल से, ओके? सेल पे भी शक्ल आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है ये सब, ठीक है? माना कि मैं लिंक शेयर करने को बोलता हूँ तुम लोग को, दैट डजंट मीन आई एम टोटली व्हाट नॉट टेक savvy काइंड ऑफ अ पर्सन. आई डोंट माइंड बीइंग विद ऑल दीस थिंग्स. ओके उन्नति, क्यों चुप के बैठी आज तू? आंसर नहीं देने का इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं सर, आप पूछो तो मैं दे दूंगी आंसर. हाँ तो अभी मैं पूछ रहा हूँ, अभी मुझे आंसर दे. वांट्स मे बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स. बोलो. Yes, like there are addictive things, many addictive things. People sometimes, like for trying basis, some people start smoking and then it becomes their habit. Smoking and drinking becomes habit. अच्छा. Trying once, twice and then फिर always हो जाता है. ये दुखड़े तुखड़े को दुनिया भर के याद रहते हैं. हाँ, they become habit and customs later. Okay, some wants may become our habits, some may become our customs. Customs like अगरबत्ती, धूप और फूल, नारियल थाली बना के जो हम लोग भगवान के सामने रखते हैं. So there are a lot of people at home doing that, you know. So initially it's just what we say, just a formality. But once you learn the technique, okay, like the Maharashtrian families now, if I talk about. So when the Ganpati comes, they exactly know, all the kids of the house also know how the Naivedyam is created, how the Kele ka patta is kept, how the flowers are decorated, how Om is written with their hand with the flowers. There's so many things like this, and they become your customs. उन्नति को बोला तो सबको स्मोकर और ड्रग एडिक्ट वाला बात करती है. तो ओके, अच्छा एग्जांपल देने का कभी कभी. क्या तू दूसरे लोग को बुराई करती होती है हमेशा? मेरे को क्यों फंसाते रहते हो हमेशा? ये बेवड़े लोग की और ये सब बातें तू ही करती रहती है. मैं कितना अच्छा एग्जांपल दिया देखा. तो आप हमेशा यही एग्जांपल देते हो हैबिट्स में, आप हमेशा यही एग्जांपल देते हो. आप बोलो मत. मैंने देख, मेरे को आज चांस मिला, मेरे को कस्टम्स दिया. आप हमेशा यही एग्जांपल देते हो, हमको भी यही एग्जांपल देते हो. घाटकोपर वालों को पूछ, मैंने वालों को पढ़ाया ही नहीं आज तक. अभी आए मेरे सामने. एग्जांपल तो दे सर. हाँ, और मैंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया ना सरफराज. मैंने कस्टम्स का दिया. ये जो लोग को हैबिट्स होता है, ये हैबिट्स वाले एग्जांपल्स देते रहते हैं. ठीक है, चल कोई बात नहीं. तेरे को हैबिट्स की बातें करने को अच्छा लगता है तो ठीक है, तो हैबिट्स का बात कर बस. नेक्स्ट वन अश्विनी, क्या होगा तेरे को? हाँ सर. चल नेक्स्ट पॉइंट तू बताएगी वापस. We want the next is wants are affected by income, taste, fashion, advertisements and social customs. How come wants are affected by these things? सर अगर इनकम अपना ज्यादा रहेगा तो फिर अपन ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे. होटल्स भी बड़े 5 स्टार में जाएंगे ना, टेस्ट वगैरह. Okay, fine. That's what I wanted to hear from you all. So you said about income increase होएगा तो हमारा wants increase होता है. We'll go for better standard of living. We'll go to better hotels and restaurants. We'll have a buffet party. We will have tandoori parties going around. We'll all go to Indian bistro. Okay. We will go to barbecue nation. Okay. Whereas when we are not having so much of income, then we'll go to some kind of Kaluda dhaba. Right? Something like that. Priyank, सुन रहा कि नहीं? क्या हो गया तेरे को? Yes sir. क्यों, तेरे को सर्दी हो गया क्या? Take care. Please take care, all of you. I want to meet you. Okay. Fashion, advertisements, customs. Again, the same thing. Social customs. When we go for marriages, when we go for some puja in their houses, somebody having a graha pravesh happening like this, then in that case, see how our wants increase. Okay. You will buy new bindis. You will buy a new dress for the party or the puja. You will go and buy some new accessories and ornaments for yourself. So your wants will automatically increase. So it is affected by these things. That is what they are saying. Am I clear with this point also? Abhishek, समझ में आ रहा है? Yes sir. Okay. Prabalpreet, आजा बच्चा. तुमको मिला नहीं आज मैं. Prabs, किधर गया तू? हो गया, इसका माइक नहीं चल रहा क्या आज? वैश्वी नेटवर्क इश्यू बोलती है. Okay. Prabalpreet, are you there? Can't hear you at all.
Please type in the chat whatever is the problem. So we have patch. ठीक है, let's catch hold of Om. Om, जल्दी आ. हाँ सर. Last point बता. हाँ सर. Wants arise with multiple causes such as natural instincts, social obligations, individuals' economic and social status. सर मतलब want मतलब जैसे ही मल्टीपल कॉजेज आते हैं, जैसे इनकम हो जाए कि कुछ और, तो उसको देखकर वांट आता है. एग्जाम्पल देना कोई. मतलब अभी किसी का कम इनकम रहेगा तो कम वांट ये करेगा, किसी का ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ही करेगा. Fine. Prabal, whenever it is ready, please come over and speak to me on the mic. Okay. Acha, we were talking about wants are arising out of multiple causes. Sometimes natural instincts. You know, you feel that आज बारिश होने वाली है, तो मुझे ना समोसे पाव लेके आने गरम गरम जाके. तो तुम क्या करोगे? भाग के जाओगे, पहले समोसे पाव ले आओगे. Okay, नेचुरल इंस्टिंक्ट है. और थोड़ी देर के बाद बारिश चालू होती है और तुम गरम गरम समोसे पाव खाते हो और एक मस्त चाय लेके बैठते हो साथ में. Okay. Social obligation means sometimes others are buying, so you're buying it. Okay, somebody is donating, so you're donating something. Like this, when others are buying mangoes, you also feel tempted, so you also start buying. Okay, individuals' economic and social status. Prabal, are you ready? Yes, sir. Can you? Good. Okay, no problem. So individuals' economic and social status also. His economic means income status we are talking. Social status means in the society he stays. So he or she has to, his wants are dependent on these factors. So well, those were the things. Anybody wants to ask any point here? All 12 points there near you. I'm sure it's a very basic thing you won't ask. But किसी को फिर भी कुछ पूछना पूछ सकते. Okay, we're moving on to classification of wants. Let's talk about necessities. I'm reading the text, pay attention to it. Any doubt you can ask there. Necessities are those which are essential for living. Necessities are further classified into necessaries for life or existence, necessaries for efficiency and conventional necessaries. Necessaries of life are things which meet minimum physiological needs for the maintenance of life, okay, such as food, clothing, and shelter. Man requires something more than necessities of life to maintain longevity. Longevity means a long life, energy and efficiency of work, such as nourishing food, good quality food, adequate clothing, which means you don't have just 2 jodi kapda and 3 jodi kapda. You have at least 50 jodi kapdas in that case. Clean water, comfortable dwelling, which means living comfortably, education, recreation, etc. Okay. So roti, kapda, makan के अलावा 2 और चीज important है, health और education. These are necessaries for efficiency in life. And then this is something more than everything. And they are still efficient. They're still necessaries. Conventional necessities arise either due to pressure of habit or due to compelling social customs and conventions. They are not necessary either for existence or efficiency. For example, Diwali के time पूजा करनी है. ये necessary है, but it's not necessary of existence or for efficiency. इससे lifestyle नहीं better होएगा, इससे existence तुम्हारा differ नहीं करता. But you still need it because you have to do one basic puja of the Mata that time. You know? Comforts. While necessaries make life possible, comforts make life comfortable and satisfying. Comforts are less urgent than necessaries. Tasty and wholesome food, good house, clothes that suit different occasions, audio-visual and labor-saving equipments, they all make your life comfortable. Okay? मतलब घर तो एक hut भी होता है. So a hut would be a necessary for you. Okay? Kacha makan can be a necessary for you. 1 room kitchen could be a necessary for you. At least that much space your small family needs. But comforts would be a 1 BHK or a 2 BHK. And 3 to 5 BHK is luxuries. Okay.
So we need comforts are, we know comforts are less important than the necessities. This is just making life more comfortable. Again, when you have 2 BHKs and 3 BHKs, you will have tube lights, fans in it, table kursi chahiye, sofa set chahiye, bed chahiye सोने के लिए, kitchen waste chahiye हम लोगों को. These are comforts. But the moment you talk luxuries, so you have got a nice, griller sandwich making activity. You have that oven there. You have a microwave separately. You have that grill which is kept above the stove, okay, which is breezing around and taking away the oil contents. These are all the luxuries. Okay, sofa अगर तुम लोग को stylish चाहिए, stylized है, उसका partitions खुलता है, उसमें से sofa कम bed बन जाता है. These are luxuries. Luxuries are those ones which are superfluous and are expensive. Superfluous means extraordinary. They are not essential for living. Items such as expensive clothing, exclusive motor cars, classy furniture, goods used for vanity, etc. They fall under this category. The above categorization is not rigid as a thing which is a comfort or a luxury for one person, or at one point of time it may become a necessity for another person, or at another point of time. Okay. We are talking about the above categories: necessaries, comforts, luxuries. For somebody, it may be just a comfort. For the third person, it may be a luxury. And for the first person, it is a necessity. Okay. When you talk very rich people, for them, having an AC full day going on in the office or the house, it's a very common thing. But a middle class will think it is a comfort thing. Okay. But a poor man will think it's a luxury. Simply they are using, they should learn to sit without all these things. Then they will know. So for one person, it may be a luxury. The other it may be a necessary or a comfort. So here we come to the concept of utility. Okay, a want satisfying power. What is this want satisfying power that we are talking? This is what is utility. Any commodity which has a power to satisfy your want, then it is called as utility. This is a concept which is used in neoclassical economics. Okay, classical means old. Neoclassical means recent. In recent economics means I'm talking the year 1910 onwards, when economics came into existence. Okay, 1930s precisely. To explain the operation of the law of demand, utility is the want satisfying power of a commodity. It is expected satisfaction of a consumer when he is willing to spend money on a stock of a commodity which has the capacity to satisfy his want. Utility is anticipated satisfaction. Very important point. Anticipated means expected. मुझे लगता है मुझे कोई अभी आके है ना अच्छा सा एक डेजर्ट खिला दे, या कोई अच्छा सा आके मुझे कुछ अच्छा सा नया रेसिपी खिला दे कुछ अच्छी. So then this is anticipated satisfaction. Or seeing at television, I'll think, "Arey, this is a good thing being shown. If I get this." Suppose the mob. आजकल घर का काम हम लोग बहुत कर रहे हैं, तो हम लोग मॉब देखते रहते हैं, नया नया मॉब आया क्या कुछ. ओके, फिर कोई कुछ नया कुछ दिखा देते हैं उसमें. ओके, एक मॉब जिसमें झाड़ू भी लग जाता है और कट का भी लगता है सपोज. सो दिस इज यूटिलिटी. एंड देन यू स्टार्ट एंटिसिपेटिंग, अरे कितना इजीली होता है ऐसे काम. When you say in mental illusions all this, then that is what is utility. It is just an expected satisfaction by the consumer. It is not the actual satisfaction, because satisfaction is actual satisfaction direct. So that is why this is anticipated satisfaction. Did you understand these words? Abhishek, did you all follow this? यस सर. अभिषेक इतना देर क्यों लगाते हो यार, जल्दी जल्दी बोलने का. अभिजीत किधर था तू, दिखा शक्ल दिखा. अभिजीत भाग गया. यशवी, show me your face at least. Not seen you today. सरफराज, तेरी तो शक्ल भूल गई मुझे. तू जरा शक्ल दिखा मुझे. सर फोटो तो लगा ना. अरे वो
वो फोटो कौन से जमाने का मालूम नहीं है। नहीं सर सेम वैसे तो अभी दिखता कम है। स्मार्ट हो गएगा तो देखने तो दे मुझे तेरे को। हाँ सर वो भी है, ऐसे मैंने दिखा। ठीक है, मतलब सर कम वीडियो स्मार्ट हो चालू गया करने तुम्हारा। जमता नहीं है सर। क्या नहीं नहीं सर जमता? जमता नहीं है। फोन फोन मतलब रोटेट करके ऐसा पढ़ने अच्छा लग रहा है तो अच्छा दिखता नहीं है ना। अच्छा, लेट की पढ़ाई हो रही है इसके लिए नहीं आ रहा है सामने। ठीक है हाँ ठीक है, सर थोड़ा कोई बात आराम से। नहीं। आराम से सो गया ना, मैं नींद में आके घुस के मारूंगा तेरे को सच्ची में। नहीं सर नहीं सोऊंगा मैं, पक्का मैं सुन ठीक रहा है, हूँ सब। okay. A commodity has utility for a consumer even when it is not consumed. It is a subjective entity and varies from person to person. A commodity has different utility for the same person at different places or at different points of time. एक commodity होती है जिसका utility हो सकता है for a consumer when he consumes or he even doesn't consume the thing. Okay? जैसे हम लोग होटल्स में अक्सर करते हैं, हम लोग बैठे होते हैं, हमने कुछ ऑर्डर किया है, हमने उस टाइम पे जो मूड है हमने वही ऑर्डर किया, बट सामने वाले की स्क्रीन किधर घूम गया? आ गया। Can you all see it again? Yes sir. Okay. पता नहीं किधर घूम हो गया, सडनली एक हाथ लगा और घूम हो गया ये। चल दिख ठीक रहा है। था लेकिन हमको तुम लोग को दिख रहा था ऐसे कैसे? मेरे पास पूरा स्क्रीन खाली हो गया इधर। हमको दिख रहा है लेकिन ठीक है, anyways good if you can see it. Yeah, so we are talking about it here. I'll put a annotator here. ये सरप्राइज को मालूम होना चाहिए ना, वो सो के पढ़ाई कर रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए मैं किधर हूँ एग्जैक्टली। नहीं सर मुझे पता है ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। सेकंड लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन चालू है, ये इधर पकड़ा है क्योंकि इधर कवर करता है इसके लिए। सर आप पर्सन टू पर्सन रीड करें। वो हो गया रीडिंग, मैं एग्जांपल बता रहा था। A commodity has utility for a consumer even when it is not consumed. एग्जांपल ये है, हम लोग होटल में बैठते हैं, हमने अपनी फेवरेट चीज उस टाइम के मूड के हिसाब से मंगाई है, मगर हमारा सामने वाले टेबल पे ध्यान जाता है अरे इसने बहुत अलग चीज मंगाया यार। एंड देन हम वेटर को देखते रहते हैं क्या दे रहा है। फिर जैसे ही वो वेटर आता ना, जो हमारे साथ घर वाले चले हैं उनको बोलते हैं, उनको पूछो ना वेटर को क्या चीज दिया उसने उधर। घर वाले बोलते तू ही बुला के पूछ। फिर हम लोग कैसे तो तकलीफ से बेचारे वो वेटर को बुला के बोलते हैं वो सामने वाले टेबल पे क्या सर्व किया। द मोमेंट यू आर आस्किंग दिस इज ऑल्सो यूटिलिटी, बिकॉज कमिंग बैक टू द वर्ड इट इज एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। तुम इमेजिन करो ये चीज मैं भी मंगाता तो मैं भी खुश हो जाता शायद। पीपल आर यू हियरिंग मी? यस सर। तुम्हें कहा मैं 4 बजे लेक्चर्स नहीं रखूंगा, तुम्हें इतना थक के लेके जैसे रिएक्ट करते हो, क्या होगा तुम लोग को? 7 o'clock ही जमता है क्या तुम लोग को मेरे साथ? नहीं सर ये सही है, ये सही टाइम है ना, कोई तो जवाब नहीं आता है। तू शाने तेरे को सोने के लिए मेरी लोरी सुननी है मुझे पता है। अरे नहीं सर ये बराबर टाइम है। हाँ सर 7 लोरी बजे लग रहा है। समझते नहीं है इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं है पर ये अच्छा टाइम है। रश्मि क्या बोल रही है? दीक्षा नहीं, अभी माइक ही बंद कर दिया, क्या बोल रही है पूछा मैंने तो। चलो ठीक है। So we were talking, it's a subjective entity. It is something which will vary from you to your partners, your people sitting on the table, your own family members. Okay, अभी family members 4 जन घर से जाते हैं तो भी हम लोग अलग अलग चीज़ ही मंगाते हैं। कभी कभी हम एग्री करते हैं अच्छा मैं तेरे साथ शेयर कर लूंगा या कर लूंगी, but we don't get so much utility or we may get more utility than the other. So it varies from person to person. Sometimes it is different for the same person also. Again the same example, you go to the same restaurant, you call for the same thing, you will not enjoy it the same way as much as you enjoyed it earlier. Okay, it should be noted that utility is not the same thing as usefulness. You know it very well. From the economic standpoint, even harmful things like liquor may be said to have utility. उन्नति तेरा example आ गया इधर, because people want them. आपने पिछले साल पूरे यूटिलिटी चैप्टर में यही एग्जांपल दिया है। दारू पिलाया तुम लोग को, कितनी झूठी है ना तू। अरे सर रहने दो, मैंने पाव भाजी खिलाई थी, को मुझे पूछो सर, प्रियांक को पूछो। प्रियांक रट्टा मारे थे, उसको याद भी नहीं रहेगा। प्रियांक याद है क्या तेरे को?
नहीं देखा ये पलटू है, ये एक नंबर का पलटू पलटू नहीं है। है, तेरे को मैंने बोला और रट्टा मारा सर पीछे। आप अरे मतलब मैंगो, एक दो जगह पे दिया था, पूरे चैप्टर में नहीं दिया था। हाँ तो फिर देखा, दिया तो था, फुकट 3-4 मैंने बार नाम दिया था। खराब कर दिया है। मैंने उर्वी हाँ को भी पढ़ा है, आप मैंने मेरा नाम खराब करते हो। सिद्धि को भी पढ़ा है। कुछ वो लोग को यही एग्जाम्पल दिया है क्या? कुछ भी बोलती है आप तू। खराब ये करते बेवड़े लोग का एग्जाम्पल तू ही देती है हमेशा। हो। हाँ ठीक अभी है, तो आज मैं बेवड़ी हूँ, पर पब्लिकली देख लिया हमने। चलो, हाँ ठीक है। utility hypothesis forms the basis of theory of consumer behavior. Okay, Prabal, हाँ, Prabal is ready now. No? Prabal, can you explain me this? Utility hypothesis forms the basis of theory of the consumer behavior. What do you mean by this line? So this means that utility is the foundation of the consumer behavior theory. कैसे वो तो पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। So because the consumer he always has some utility, like for example, like consumer may have utility for food or whatever he likes. So that's why according to that, utility is the foundation of consumer behavior, according to me. Prabal, this time is better for economics or 7 o'clock lecture is better? No, so this time is better. अच्छा 7 o'clock में क्या प्रॉब्लम है? So 7 o'clock is like too late for us. So अच्छा, तू कौन से गांव में रहते हो बच्चा? no, so not God, like so What you are saying as if you have to travel some miles back and then लड़कियां छेड़ती है रास्ते पे, इसके लिए तेरे को घर पहुंचने को तकलीफ होता है। नहीं क्या तुम लोग भी ना सच्ची में। Okay, every time it is all mental and psychological well-being. I mean the felicity part of it. Okay, you must be feeling this time is better, but I think 7 o'clock you all react better to me. You know, जैसे पूरे दिन के लिए तुम लोग वेट करते हो लेक्चर के लिए और फिर लेक्चर हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे। ये तो ऐसा लग रहा है कि बस नींद की डोसेज दे रहा हूँ मैं तुम लोग को इकोनॉमिक्स में। चल ठीक है, anyways, just trying to take important suggestions of you guys now. Okay, so that I tell ma'am to keep accordingly the lectures now. Because 4 बजे मुझे लगता है तुम लोग सब एकदम खाके पी के ऐसा बड़ी सी डकार मार के बैठे हो और अभी वेट करो, वही बंद करो और सोने दो मुझे। Okay, next. Well, coming to this line, utility hypothesis forms the basis of theory of consumer behavior. Theory of consumer behavior is based on utility. First comes utility, then comes want, and because of the want, then comes the demand. So demand comes later, utility comes first. It is the basis of law of DMU. Law of DMU is the basis of law of demand. From time to time, different theories have been advanced towards explaining the consumer behavior to explain us his demand for the product. Thus to explain his demand for the product, two important theories: marginal utility analysis propounded by Marshall, and now this year you're going to learn something new: indifference curve analysis propounded by Hicks and Allen. Okay, एक नया अंकल के बारे में सीखेंगे हम लोग इसमें. Okay, Hicks and Allen. Okay. Unnati, you want to ask something? यस सर आप ये इंडिफरेंस का इस चैप्टर में पहली बार पढ़ा रहे हो कि आपने पहले पढ़ा है? मैं भूल गई। मैंने पढ़ाया नहीं तुम लोग को, बट ये तुम लोग पहली बार ही पढ़े हो और ये तुम्हारा FY BCom का पोर्शन होने वाला आगे। मतलब ये पिछले वाले चैप्टर में नहीं था ना? नहीं किया उसमें, हमने मेंशन किया होगा शायद। ओके, क्योंकि उसमें वो जो PDF डिमांड वाले चैप्टर का था ना, उसमें 6-7 क्वेश्चन है इंडिफरेंस का। Okay, because there we have not dealt with it so much. We mentioned about it, but we did not deal with it. अभी ये चैप्टर में पूरा डिटेल में सीखोगे। तो अगर तुमने मिस्टेक्स जो 5-6 क्वेश्चंस के अगर किए वो टाइम पे है, तो अभी तुम लोग बेटर कर लेना उसको। ओके, क्योंकि ये चैप्टर का तो हाँ, ये चैप्टर में एडअप हो क्या आएगा वो पूरा। ओके, चलो, और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं वैसे तो, बट आई थिंक दिस 100 क्वेश्चंस दैट आई सेंट वाज इनफ फॉर यू ऑल, सो मोर देन दैट डोंट वरी अबाउट इट। Chalo, we start with marginal utility analysis. This theory is formulated by Alfred Marshall, British economist. Please underline these words and keep. You have to know these economists' year, books names, which country they belong to. You have to know these small points also always.
and he explains how a consumer spends his income on different goods and services so as to attain the maximum satisfaction. Now here I will specify one more thing. हमने जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और जो ये साल 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आई है उसमें कॉन्सेप्ट पूरा नेग्लेक्ट कर दिया गया था और कर दिया है अभी भी. That is EMU, equi marginal utility. You know, the biggest theories defect we had learned last year in 12th standard was that it was based on single bond. And so he propounded a new theory based on multiple bonds. And he came up with something called as EMU, equi marginal utility. Okay, I'll talk about it later on when it is relevant. This theory is based on certain assumptions. But before stating the assumptions, let's start understanding the meaning of TU and MU. Okay, so assuming that utility is measurable and additive, it can be added on. TU may be defined as the sum of utility derived from different units of a commodity consumed by a consumer. Total utility is the sum of all the utilities, marginal utilities derived from the consumption of the units. So how do you find TU? जितना भी MU होगा उसको ऐड करो वो स्टेज पे. अगर MU का फर्स्ट स्टेज है तो MU1 is the answer. So MU at first stage is equal to TU. When you have second stage, so MU1 plus MU2, that will become TU. Then it is third stage, it will be MU1 plus MU2 plus MU3 is equal to TU that time. Okay. What is marginal utility? It is nothing but the difference between the total utilities, the present consumption and the previous consumption. It is the addition made to the total utility by the consumption of an additional unit of a commodity. In other words, it is a utility derived from the marginal of one or more additional units consumed, processed by the individuals. Okay? ये theoretical part है. सब एक बार read मारना, समझना statement. Doubts रहेगा पूछ सकते हो कभी. Okay. So what is MU? That is the addition made to the TU by the addition of consumption of one or more units. In other words, it is present consumption TUN minus previous consumption TUN minus 1. चलो ये सब तुमने किया हुआ था तो I just was reading out for you. So now comes assumptions of utility. Let's see who remembers the assumptions. Okay, let's go to Priyank. First point, rationality. What is the assumption of rationality? पहले बता assumptions क्या होता है? नहीं रुक. पहले मुझे ये बता assumptions होते क्या हैं? जो मतलब जो वो चीज होती है जो बदलनी नहीं चाहिए, they should remain constant. हाँ, but assumption क्या है? मतलब क्यों लेते हैं हम लोग assumptions एक law में? क्यों नहीं बदलने चाहिए? This should be present, then only the law will be applicable. That is the answer. Okay, when you are going to have assumptions, then only the law will be applicable. ये चीज करने के लिए ये चीजों का ध्यान में रखना है और ध्यान में सिंपल चीज रखनी है, ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए. ओके, क्यों नहीं बदलनी चाहिए? ये फैक्टर्स हैं उसके, क्योंकि ये फैक्टर्स अगर बदलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो लॉ चेंज हो जाता है. ओके, अच्छा, let's come to rationality. Give me an example at every stage. All of you, those who will be explaining this. Rationality. बता भी. The consumer should be rational, मतलब sound mind, and he should try to maximize satisfaction. मतलब उसको कोई पागल टाइप का नहीं होना चाहिए. मेरे को मालूम है तू हंस सकती. ओके, देख दूसरे लोग भी समझ रहे हैं. मैं बताऊं क्यों हंसा अभी? उन्नति सुन रही है क्या तू? हाँ बताओ ना. वो बोल रहे हैं लॉ है ना, पागल लोग पे नहीं अप्लाई कर सकते. हाँ मेरे को पता है कौन कितना पागल है. अरे वो नहीं बोल रहे हम लोग, तेरे मैं बोल रहा हूँ, उसने जो बोला मैं रिपीट कर रहा हूँ. तेरा मालूम नहीं पड़ रहा था माइक रुक गया. मैं वही बोल रही हूँ मैं भी. ठीक है, मेरे को पता है. अच्छा, let's take the second point with Abhishek. Second point बताएगा cardinal measurability of utility. Sir, money remains constant. इतना सीरियस क्यों है यार? तो क्या है ना? No sir. अरे
सो क्या है, मैं तो रात को सोया नहीं क्या तू? हाँ हाँ, अच्छा, और खाना रात को खाया? सोया था। खाना हाँ खाना यूटिलिटी आया कि नहीं तेरा लाइफ में? हाँ, अभी सेटिस्फाई भी हो गया। वेरी गुड। अच्छा, हाँ अभी मेरे को डाइजेशन भी सुनाई दे रहा है साथ में। अच्छा मुझे ये बोल, कार्डिनल मेजरेबिलिटी का मीनिंग क्या है पहले? पॉइंट का मीनिंग नंबर होते मेजर करना, किसको measure नंबर्स में करना? मेजर, किसको measure यूटिलिटी को, करना? यूटिलिटी को। तो लॉजिकली हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं? रियल में हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं ये चीजें? नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसमें अजम्पशन क्या है? इसमें क्या अज्यूम करना है कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी में? अजम्पशन क्या बोल रहा है हम लोग को? तूने बोला, देखो रिपीट करना है सिर्फ एक बार। मेजर करना है करेक्ट, कार्डिनल नंबर्स में। बेसिकली हम लोग कार्डिनल मतलब हार्ट का मेजरेबिलिटी नहीं हो सकता है। हार्ट कितना खुश है, कितना दुखी है, कि कितना सेटिस्फाई हुआ, कितना नहीं हुआ, हम लोग एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वी कैन मेजर द हार्ट्स कार्डिनल यूनिट्स। Okay, there are two types of units of measurement. One is called cardinal, the other is called ordinal. So there are ordinal numbers and cardinal numbers. Ordinal क्या होता है? First, second, third, fourth. Okay. Cardinal क्या होता है? It is 1, 2, 3, 4, 5. So ये difference है उसमें। अब यहाँ पे हम लोग measure कर सकते हैं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। Utility is measurable. It is quantifiable entity. It implies that utility can be measured in cardinal numbers and it can be assigned a cardinal number like 1, 2, 3, which means itna units of happiness या satisfaction मिला। Okay, that's what it means. निकेत, ये सुजीत नहीं आया है? सुजीत नहीं दिख रहा है मेरे को इधर। नहीं सर, वो ज्वाइन नहीं है। क्यों? क्या पता ऐसे कैसा है? सुजीत नहीं कैसा मिस कर रहा है लेक्चर? पागल है क्या? ठीक है, उसको पहले देता हूँ बाद में मैं। चल ठीक है निकित, तू मुझे बता जरा। यस सर। कॉन्स्टेंसी ऑफ द एमयू ऑफ मनी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉन्स्टेंसी क्या होता है वैसे? सर मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, मतलब उसका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उसका प्राइस 10 रुपीज है, सेकंड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उसका भी प्राइस 10 रुपीज रहना चाहिए, मतलब ऐसा कांस्टेंट रहना चाहिए। वेरी गुड। बट ऐसा रियल में होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। सो इधर क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग? कॉन्स्टेंसी ऑफ एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अच्छा नेक्स्ट, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब ये पॉइंट दिखने में डिफरेंट है, रीड कर लो, मैं किसी को पकड़ता हूँ। सरप्राइज, जाग रहा है ना? Yes sir. Please keep reading. Yes sir. Okay, let's have Karan. You'll explain me this, the hypothesis of independent utility. Karan, are you there? Karan, not to be seen also. He's not there. Not there. That's what I can see him also. क्या हो गया उसका? बंद करके सो गया क्या जाके? Last in the group only straight up. Okay, somebody else will take up by the time. Prabal, can you answer me this? The hypothesis of independent utility? Yes, sir. Yes, so tell me. So this means that the total utility that the person gets, like from the whole quantity he has purchased or consumed. Okay. So his total utility should be what? Like total utility, like what, like he has taken some like 2 or 3 units of food, like we assume like 3 or 4 units of food he has consumed or purchased. So that is his whole like utility. That is his total utility. Correct. Of that person. Basically, this point means a total utility which a person gets from the whole collection of goods purchased by him is simply the separate utilities of goods. Because he saw the commodity A, he purchased that, he was satisfied and he was very highly satisfied. But then the moment he saw commodity B,
He wanted to buy that also, and that also satisfied one of his wants. He saw commodity 3, that also satisfied one of his wants. Okay, but this law that you are studying right now, you see, it is a modification of what you learned in the 12th. Let's not forget in 12th standard, the biggest point we learned, the biggest demerit we learned of the law, the criticism of the law was single want. Now here we are talking so many goods. The total utility that he gets is going to be from individual units also he got utility. तो यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा goods की बात करें और law last year तुमने जो सीखा वो अलग था. So this is basically the modified version of the law. Okay? So don't start feeling last time तो कुछ और बोला था, अभी तो कुछ अलग ही बता रहे हैं. ये धीरे-धीरे law, and this is what I was telling all in the classrooms. Whenever we did with the law and whenever you will do with the law in economics, it will always have first is assumptions and then is the exceptions. And exceptions will come because of which there will be some criticisms of the law. In future, you will be learning a lot of criticisms for different laws that they will teach you. Okay? Chalo. Then we start with the law of DMU. We know the law of DMU. So you know what is the DMU saying. The additional benefit which a person derives from the given increase in the stock of the commodity diminishes with every increase in the stock which he already has. Okay, this we have learned. This year nobody is going to take definitions from you. But this analysis of the statement, एक statement के ऊपर कितना बड़ा analysis चालू है वो देखो तुम. तो तुमको बाकी चीजें ज़्यादा read करनी है अभी. Nobody is going to ask you the definition. Okay, but you should know your defines well. In other words, a consumer increases consumption of any one commodity, keeping the consumption of the, keeping constant the consumption of all other commodities. The MU of the variable commodity must be eventually declining. Whatever MU you will receive with whatever commodity, initially it will satisfy your wants. But later on the MU is diminished. Okay? So this is how the law has to be analyzed now. This law describes a fundamental tendency of a human nature. In simple words, it says that as a consumer takes more and more units of a good, the extra satisfaction he derives from every extra unit of a good goes on falling. Same thing in next two lines here they have mentioned. जितना पा लेते हैं उतने कम पाने की लालसा होती है. Okay? It is noted that it is the marginal utility and not the total utility which declines. MU always declines. TU never declines. With the increase in the consumption of goods, TU will go on increasing only. Okay? चलो चॉकलेट का एग्जांपल आया तुम्हारे सामने. पढ़ो, मैं बहुत तंग करने वाला हूँ क्वेश्चंस पूछ के इसमें से. Okay, just see the example, try to understand. Okay. Ready all of you? Yes, sir. Chalo, good. Let's take up it. Siddhi, please come over. Yes, sir. Siddhi, what is the MU at the 6th unit you are getting? 6. And what is the TU you are getting at the 10th unit? 98. Okay. So what is the relationship of TU and MU that you see? TU goes on increasing and MU goes on increasing but at a diminishing rate.
Mu is increasing or what? Check properly. No, sorry, mu goes on decreasing. And Tu goes on increasing at a decreasing rate. So what you were saying was for Tu actually. Okay, ऐसे बोलता. अच्छा ये तो first point हो गया. Second point क्या था? हम लोग को सिखाया था. When TU's maximum mu becomes 0. Can you see that there? At 10th. Correct. Then point. Then mu enters into the negative quadrant. And mu? When TU decreases, mu enters into the negative quadrant, and that is dissatisfaction. Very good. Very good. So these are the 3 points you remember from last year. First point to actual wala bhul gaye. Oh, mu and TU both start at the same point. Mu and TU start at the same point. So just repeating these points, and this is what you should understand. Okay, every time that TU and mu shown, the relationship between TU and mu is such that TU and mu both begin at the same point. The second point is TU goes on increasing, but at a decreasing rate. Decreasing rate means first the difference between TU is 20 units, then you see is what 15 units, then the difference is 10 units. So this is, though it is increasing, but it is the gap between the TU goes on decreasing. Mu you see goes on falling, it is declining, it is diminishing right from the beginning, and at one point we get to see that mu becomes 0. What is that point? That point is where TU becomes maximum and stabilizes. And then after that and beyond that, what you see, TU will fall and mu will become negative, which means at 0 it cuts the x-axis, and beyond that when it moves downwards, so it enters the negative quadrant. Okay, ये वही example है जो तुम लोग ने basically example नहीं, sorry, it is the same relationship which you have done last year in 10th or 12th standard books also. Okay, these are the 4 points coming up. Please see these 4 points properly. Instead of reading that huge example, read what I am telling you. Any doubt on this? Please ask. Abhijit, any doubt? No, sir. Abhishek, any doubt? No, sir. अभिषेक मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं ऐसा मन में लगा उस दिन से कि तुझे 12th का इको आई डोंट नो योर बेसिक्स कैसा है, और मेरे को लगा कि तुझे पूछते रहना जरूरी है मुझे, हाँ, क्योंकि मैं तुम लोग को इसके लिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ, 12th में कर चुके हो, बट देन आई कीप रिपीटिंग, आई कीप हाईलाइटिंग दोस थिंग्स. तो कहीं पे भी प्लीज डाउट होगा तो पूछना, बिंदास, डरने की जरूरत नहीं है. हो गया चारों पॉइंट? Sir, saturation point. Very good. I want you to say these words. Correct. It says when mu is 0, TU is maximum. ये तो समझा है ना? Okay. It is saturation point means इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता आगे. TU cannot go higher than that. It has reached its saturation point, exhausted point. Okay. Prabal, are you there? Yes, sir. Prabal, क्या हो गया करण का? सर एक्चुअली उसका डेटा लॉस हो गया सर, मतलब जो कनेक्शन, उसका इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया. But is he not able to re-log in? No, sir. He has rejoined. He's there? Yeah. Karan, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Karan, तो आंसर नहीं दिया मेरा ग्रुप में पूछा तो. कौन सा? ठीक है. Okay. Is that word saturation clear? The one who asked? Yes, sir. Okay. Let's go on to the next part. 5th and 6th point also you can go through and go through the diagram immediately.
Okay, let's take up. Let's ask Preeti. Preeti, you there? Preeti, are you there? Preeti, Preeti. आप सो जाते जाके इधर सब लोग। 7 बजे लेगा लेक्चर होगी नेक्स्ट टाइम। इसको गाँव लेट पहुंचने में पहुंचे, कोई बात नहीं। तेजल, are you there, dear? Yes, sir. सबसे फास्ट है ना रिप्लाई मेरे को निकित करता है। निकित इतना जोरदार आवाज में यस सर बोलता है ना, ऐसा लगता है आर्मी वालों को सिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। ओके, किसको पूछा मैंने अभी? प्रीति तो नहीं है। सेजल इज देयर ना? सेजल प्लीज आंसर मी। सेजल, हाउ डू यू डिस्क्राइब द यूनिट्स कंज्यूम फ्रॉम 0 to 1? नहीं, 0 to 5. Okay, how is the consumption process going on? Explain me. U increases and MU decreases. What increases by? Sejan, not getting so scared. Come on. What I asked, from 0 to 5, describe me how is the consumption happening. So you have to say that when the first unit of the commodity or the chocolate bar is consumed, the units of utility is 30. The second unit consumed, it is, come on, tell me, it is 20. And at third unit, it is 10. And at a fourth third is unit, not 10, it is, third is 15. Fourth unit, it is 10. Fifth is? Fifth is 250. अच्छा, अभी डायग्राम में देखिए बोले MU और TU सेम किधर है? At the first one. First point. अच्छा, कौन सा first point? When the first consumption is done. Last की first. ये चल स्क्रीन पे आना, मेरे को तेरी शक्ल देख। Last one. शक्ल देख के तंग करते ना बड़ा मजा आता है मुझे। आई? Tejan, where are you lost? घूम हो गए। फोटो तो दिखा तेरा, बाल वाल बना के आई क्या? गुड। अच्छा, आई एम आस्किंग अगेन, ओके, MU और TU सेम किधर दिखा तुझे? M4 M4 Run, whom you are talking to, dear? अच्छा, Sejal, बोल बोल, we giving you the chance again. Sorry? Last one. Last one means what? This one or this one? Yes. Your MU and TU same, na? So, yes. डर लग रहा है क्या आंसर देने के लिए? Confused नहीं हुआ, I am troubling you because I want these concepts to go straight into your head. Okay, चल अभिषेक को तंग करेंगे। अभिषेक आजा, शक्ल दिखा। यस सर। आजा आजा, फोटो दिखा जल्दी। सर दिखाई नहीं देता फिर ग्राफ। शाना मत बना, पहले दिखाई दिया ना, अभी तो ऐसे देखे बिना बता। हाँ अभी दिख रहा है ना, देखो सब झूठा। अच्छा मेरे को बोला MU TU सेम किधर है? सर नहीं है सेम। सेम नहीं है, ऐसे क्यों? MU का ग्राफ है। अच्छा जस्ट 1 सेकंड ना, फिर ना जल्दी जल्दी है। हेलो, या हाँ क्या बोलते हैं, क्या सेम नहीं है? सर मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। TU तो है ही नहीं इसमें। देखा सेजल, देखो कितना पागल बनाया हम लोग। TU MU सेम किधर और तू बोलती है लास्ट में, फर्स्ट पे। अच्छा मेरे को एक बात बोल अभिषेक,
इधर घूम गया, हाँ इधर सर। वापस। हाँ, मुझे एक बात बोल, डिसयूटिलिटी कौन सा पॉइंट पे दिख रहा है देखो? सर 0 से नीचे, मतलब 0 से एक्स नीचे। पे। हाँ, हाँ, तो कौन सा यूनिट ऑफ कंजम्पशन है जिधर डिसयूटिलिटी दिख रहा है? -10। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा यूनिट ऑफ कंजम्पशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11। फिफ्थ, सिक्स्थ, 11। 11। दैट इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, नाउ यू कैन sleep. No Okay, sir. so you are aware of concepts. Okay, people, very simple. You can see that this is only mu here. mu नीचे आ रहा है, और अगर मैंने पूछ भी लिया दोनों सेम पॉइंट पे कहाँ होते हैं, मैंने ये पूछा था तो दिख नहीं रहा, वो ठीक है, बट कहाँ होते हैं, आंसर इज योर, because tu and mu would have started at the same point, right? So this is what you have to realize. Don't get scared, be confident in answering. रॉन्ग दोगे आंसर्स, उसका भी रीजन पता होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता चलता है उससे। ओके, चलो, लेट्स गो अहेड। एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? यू वांट टू आस्क समथिंग? Okay, so we proceed. Now this all you are going to read. I'm not doing anything out of here. Okay, but I have to do something out of here. I will not do till here. Okay, here is satisfaction will be maximum. This is what is about the story going on up with the diagram and with the chocolate, that schedule that they have given. What happens when there is a change in the price of the good? Okay, let's talk this. What will happen if the price of the commodity is going to change? So the equality between mu and price is distributed when the price of the good falls. The consumer will consume more of the good so as to restore the equality between mu and price. The mu from the good will fall when he consumes more of the good. He will continue consuming more till the marginal utility becomes equal or to the new lower price. On the other hand, when the price of the good increases, he will buy less and he will equate the mu to the higher price. We can say that downward sloping demand curve is directly derived from the mu utility curve. Okay, ये चीज का meaning बहुत simple है. I'm going to explain you with some expressions here, with some hand gestures here. Try to understand this. Okay, so mu and price is equal. ये mu है, ये price है. Okay, if price is going to go higher, so what will we do? If price will go higher, then mu is lower, you see. Because mu is lower, mu will not change. We will pay less and buy less, which means we will demand less of commodities. Okay, we'll demand less of the commodity. We'll bring down the price in that form. We will buy less. On the other end, if the price is going to go low, then mu is on the higher end. So we will pay more and bring the price up to the level where we can afford to buy more and more of it, and mu will be equal to price. Always mu should be equal to price. This means the consumer is reaching to the point of satiety. This is his point of highest level of satisfaction. Are you clear? Is there any doubts? Purvi, are you there? Yes, sir. Do you understand what I explained right now? Yes, sir. Very good. Simran, did you follow, dear? Yes, sir. You understood what I explained about the price and the utility? Yes, sir. Okay. Let's go to Marvel. Have you followed? Yes, sir. I know this is a child's play for most of you now, but just trying to be sure of it. This is a concept. You have to read this carefully. This is what I explained with my hand movements. Understand this. Okay. हाँ, एक और बात मैं बोलता हूँ. mu should be equal to price में. Always the price will move. Either price will go high or the price will go low. mu will remain there because mu is you. You're going to remain there only. Okay. So if the price is fallen down, you will not bring down the mu. What you will do, mu is higher now, so price will be paid higher and more will be demanded. Because you're demanding more, so what is happening? Your mu is going on decreasing further.
And because of that, what happens? Your MU becomes 0. You will consume until it becomes 0. Okay? Let's come to the other part. Abhishek, समझा क्या बच्चा? जो explain किया अभी? Yes, sir. Okay. Let's go on to the next part. हाँ, बोलो अभिषेक. इसमें मैं सरफराज, इसमें डिमांड कब कैसे रहेगा? क्या बोल रहा है? डिमांड कब कैसे रहेगा? डिमांड कब हमेशा डाउनवर्ड होएगा. डाउनवर्ड क्यों होगा? जब प्राइस फॉल होता है ना, तो उससे क्या होएगा? हम लोग का प्राइस फॉल होने से हमारा डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो हम ज्यादा बाय करते हैं, तो हमारा एमयू और भी फॉल होएगा आगे चल के. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा. अगर तू एग्जांपल को अलग वे में सोच, सपोज प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा. क्यों? हम लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि हमारे पास प्राइस इतना हाई पे करने के लिए नहीं है, तो हम विल ब्रिंग डाउन द डिमांड. Okay, so whenever the price increases, demand goes less, and whenever the price falls, the demand goes higher. So basically, it's going to remain a downward sloping curve because this is showing inverse relation. Inverse relation में downward curve ही बनेगा हमारा. Are you clear, Sarfaraz? Yes, sir. Okay, वो मतलब कंफ्यूज नहीं होने का कि प्राइस बढ़ गया तो क्या होएगा. उससे भी क्या होएगा, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है हमारा, तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है हमारा. डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, तो हम लोग स्लोप जो बनाते हैं उसमें ए टू बी, ऊपर की तरफ बी चला जाएगा. और जब भी हम लोग प्राइस कम करें तो ए टू बी, बी नीचे की तरफ आएगा. जो हम लोग ज्वाइन करके बनाते हैं ना पॉइंट्स, तो ए और बी पॉइंट्स बनाओगे इंटरसेक्शन का. Yes, sir. प्राइस और डिमांड का. तो जो इंटरसेक्शन बनाते हो, अगर डाउन प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा हमारा, तो बी पॉइंट नीचे आएगा तुम्हारा. Okay, so that is how you have to understand. Diagram should just go into your mind straight away. In reality, a consumer spends his income on more than one good. In such cases, the consumer equilibrium is explained with the law of equi-marginal utility. Okay, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, ओके, या उसका रियल इनकम बढ़ता है. रियल इनकम कब बढ़ता है? जब उसका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है. ओके, in other words, how does it take place? Whenever the price of the commodity falls, his real income has increased. So he is going to, whatever his income saved, he will spend it on some more goods. He will buy more goods. So his demand is going to be higher. And then we are going to use equi-marginal utility. He is just not buying one commodity. He is buying more than one commodity at the same time, so that his satisfaction is remaining the same. According to this, the consumer will be in equilibrium when he is spending his money income on goods and services in such a way that his ratio of MU and price tends to be equal. ये तुम लोग को लास्ट ईयर डेफिनेशन सिखाया गया था इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का. Okay, I explain you what they are saying here. Suppose the price of the commodity has fallen, or suppose his income has increased. When his income increases, he can buy more goods now. When he buys more goods, he's spending what the consumer will be in equilibrium when he's spending his money income on goods in such a way that the MU of each good is proportional to its price, until the last rupee spent on each commodity yields an equi-marginal utility. यानी कि वो तब तक स्पेंड करेगा, अगर मार्केट में 100 रुपीज लेके गया है, उसमें वो कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, 3 कमोडिटीज बाय करेगा. ओके, और वो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बाय करेगा इसका. उसमें उसको 1 यूनिट ऑफ ए मिलेगा, 2 यूनिट ऑफ बी मिलेगा, या 3 यूनिट ऑफ सी मिलेगा. या तो उल्टा बोलो, तो 3 यूनिट ऑफ ए मिलेगा, 2 यूनिट ऑफ बी मिलेगा, 1 यूनिट ऑफ सी मिलेगा. He can get any kind of this combination because he is having equi-marginal utility. उसका MU is equal to price. जितना पैसा स्पेंड करने के लिए वो पूरा पैसा भी स्पेंड होगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स भी बाय करेगा, 1 रुपया भी उसके पास लास्ट में नहीं बचेगा, और वो 2-3 चीज घर पे उठा के लेके आएगा. Are you clear with this paragraph what I said? Anybody who is not followed, please talk to me.
Anybody who didn't follow this what I said? Okay, because you remember last year हम लोग, या Nikit, please tell me. Sir, can you repeat this again? Okay. Repeat से अच्छा ना, ये example आ रहा है, हम लोग इसकी बात करते हैं. Okay. तू ऑनलाइन, तू मेरे साथ लाइन पे रह, मैं तेरे को पूछते जाऊंगा, तू बता तेरे को समझ रहा है कि नहीं. देख सपोज तू 100 रुपीज लेके गया मार्केट में. हाँ सर. ओके, तू पूरा 100 रुपए का एक ही चीज एप्पल बाय कर रहा है. तो ये हमारा पहले का लॉ था जिसको हम बोलते थे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट वाज डीएमयू. बट बाद में उनको बोला गया कि हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं हम लोग एक ही चीज के लिए थोड़ी जाएंगे सिर्फ. हाँ. So you will have more than one wants. So then we modified this law and we call it as EMU now. EMU means equi-marginal utility. Okay, here your marginal utility is equal to price spent on it. But you are not buying one commodity. You are buying suppose 2 commodities or 3 commodities. अभी यहाँ पे क्या दिया है equation? MUX और MUY, 2 commodities का MU दिया हमको. Yes sir. So we have to divide MUX buy करने के लिए, MUX मिलने के लिए हमको MUX के लिए PX स्पेंड करना पड़ेगा. X buy करने के लिए X का प्राइस पे करेगा तू. Yes sir. तेरे पास फिर भी पैसे बच रहे हैं तो तू Y भी buy करेगा. You will not bring back even 1 rupee at all. Okay. So you will get MU of Y also separately. अगर Z है तो Z भी आएगा साथ में. अगर पैसे फिर भी बच रहे हैं then you will buy Z also. So might be X का तूने 3 यूनिट्स बाय किया, Y का 2 यूनिट्स बाय किया और Z का 1 ही यूनिट मिला तेरे को. और तेरे 100 रुपए भी खत्म हो गए, तेरा सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट हो गया, तेरा X, Y, Z तीनों अलग अलग चीज का भी सेटिस्फैक्शन हो. तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. Yes sir, understood. Are you clear? Yes sir. Okay. अगर और किसी को समझना है तो मेरे साथ पर्सनल चैट पे 12th का टेक्स्ट बुक लेके वो बैठ सकता है. I can explain you from your textbook what is given there as an example, provided you have your textbooks now with you. Okay. Anybody who didn't follow, please, like Nikit, tell me boldly about it. Then I can think of explaining in some other way also might be. किसी को नहीं समझा है बिंदास बात कर सकता है. Surface, Vaishvi, you can type in the chat section. I don't know whether in Ghatkopar you already done with this. Daksha, EMU सिखाया था तुमको last year? क्या? EMU सिखाया था क्या last year? No sir. नहीं सर. क्योंकि मैंने अपने बैचेस में सिखाया था उनको ये. नहीं सर, वो पार्टी सर ने कैंसिल करवा दिया था. हाँ, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं था. She is not wrong in doing that. But then ये जो पार्ट है ना, ये मुझे मालूम है तुम लोगों को ये साल आने वाला है, FI में आने वाला है वापस से. इसके लिए मैंने ये पार्ट छोड़ा नहीं था उस टाइम. समझा? तो तुमको हम लोग को नहीं करवाया था. अच्छा वो ठीक है, बट अभी समझा मैंने जो बोला? मतलब नहीं समझा. थोड़ा थोड़ा. अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो ध्यान से. I'm telling you, you carry 150 rupees now. Okay? And you're going to spend 50 rupees on commodity A, 50 rupees on commodity B, and 50 rupees on commodity C. सुना? हाँ सर. हाँ बोलती रहे बीच बीच में. ओके. अभी commodity A 50 rupees का एक ही यूनिट मिला देखो. ओके. कमोडिटी जो है तुझे 2 यूनिट्स मिले तो देखो एक यूनिट 25 रुपीस का पड़ गया. और कमोडिटी सी जो है वो देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो might be 3 units you got of that. Yes. तो जब घर पे आए तो तुमको 3 X, Y, Z 3 कमोडिटीज मिला. हाँ. तुमको MU of X मिल गया by paying price of X. हाँ. तुमको MU of Y मिला by paying price of Y. And you got MU of Z by paying P of Z. So you got 3 commodities and you are very happy and over satisfied. You are highly satisfied because you have come to the logic of equi marginal utility. तुमने पैसे पूरे कंप्लीट किए, उसमें बेस्ट पॉसिबल कमोडिटीज बाय किया और उसमें तुमने जो भी है सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट पाया. Everyone is clear? Anybody who still didn't follow? Yes sir. Okay, you will sit today and read with EMU from the 12th standard textbook. जो कैंसिल किया उसको रब करके वापस से रीड करना बैठ गया. सर पेन से किया है तो
very bad this is. My students use only textbook में pencil. उन्नति का बुक इतना नीट मिलेगा तेरे को आज ना। सर मस्ती कर रही हूँ मैं तो, हम पेन से नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा वो लोग को रूल भी मालूम है। I will shout and I will scream at them if they will use pen in the textbook. मैं right from 5th standard child to 12th standard child to TYBCom child, whenever I teach, वो लोग का गला दबा देता हूँ मैं, मेरे सामने पेन नहीं यूज करना टेक्स्ट बुक में। ओके सर। और मेरे वजह से तो मेरा बेटा इतना डरता है, उसको मालूम है ये चीज में पागल हो जाता है, some booth comes to him, so he dare not do that. So I have tried instilling this, ये सब बेसिक वैल्यूज है। पेन यूज किया ना पूरा टेक्स्ट बुक गंदा लगता है उसके पास, नेक्स्ट टाइम पढ़ने का मन नहीं करेगा। ओके सर, अगर किसी और का टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं और उसने ही किया हो तो? ना स्टूपिड डाउट्स है तुम लोग का ये सब। वैसे अभी माइक ठीक हो गया तेरा शानी, मैं आंसर पूछता तभी तेरा माइक खराब हो जाता ना सर, तभी सबका नेटवर्क भी चला जाता। हाँ बराबर उसी रहेंगे सब, ऐसे कुन्नस में देखते हुए खड़े रह जाएंगे, बस ऐसे ही चलेगा वो लोग। सर टाइम खत्म हो गया सर। चुप रहे, मैं बहुत जवान है अभी। सर इसको बाहर, इसको जाने का ही घाई रहता है सर। प्लस ये आज लेट है तुम लोग का सर, एक और लेक्चर है सर। 15 मिनट में दूसरा लेक्चर है। 15 मिनट में? हाँ सर, अभी थोड़ा खाना पीना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर उधर भी सोना पड़ेगा सर प्लस को। हाँ सर, वहाँ पे भी नींद आएगी। ठीक है। कुछ लोग तो मुझसे बात ही नहीं करते, कुछ लोग जो बात करते हैं वो अटर नॉनसेंस बोलते हैं मुझे यहाँ पर। चलो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू योर सर। विश इज माय कमांड्स, ओके, एंड